Bismillahirrahmanirrahim. We will be learning about the Urdu pronouns today in today's lesson. So let's start. The chart that you see in front of you, the table, it has on the very left column, it says cases on the top. So the Urdu pronouns have 4 cases: direct, accusative, oblique, and genitive. Direct is, the name says, is direct speech. Accusative is indirect, and genitive is possessive. Then you see 3 persons here: first person, second person, and third person. First person singular is I, and first person plural is we in English, that is. Second person, formal, informal, both cases is you, and very informal. In English it says thou, but basically it's you also in English. Third person, it has singular, this, and plural, these. Then it has singular, that, and plural, those. Okay, so now let's look at the Urdu words for the first person. In direct case, singular is मैं. For example, I drink water. मैं पानी पीता हूँ. मैं पानी पीता हूँ. First person plural would be we in English and hum in Urdu. We'll take the same example where we said I drink water. Now it is we drink water. So it will be hum पानी पीते हैं. हम पानी पीते हैं. So to repeat it in singular, first person direct will be मैं पानी पीता हूँ, and plural would be हम पानी पीते हैं. Now let's move to the second person, formal, and we'll use the same example. आप पानी पीते हैं. आप पानी पीते हैं. And the informal you would be तुम पानी पीते हो. तुम पानी पीते हो. There's a third version of the second person, which is very informal. It is तू पानी पीता है. तू पानी पीता है. Now let's move to the third person, indirect form of the case. Singular is this and these. ये. This is a boy. ये एक लड़का है. ये एक लड़का है. And the plural would be these are boys. Again, the word is in Urdu same, ye. So to translate these are boys, ये लड़के हैं. ये लड़के हैं. Okay? So in the third person, singular, that and those. In both cases, the Urdu word is wo. Now let's take an example. She is a girl. वो एक लड़की है. वो एक
लड़की है. Those are girls. वो लड़कियां हैं. वो लड़कियां हैं. Okay, so to repeat the direct case again, मैं, हम, आप, तुम, तू, ये, वो. Let's take more examples of this case. Let's say I am going to school. In the first person singular, मैं school जा रहा हूँ. मैं school जा रहा हूँ. First person plural would be हम school जा रहे हैं. हम school जा रहे हैं. Now the second person formal, आप school जा रहे हैं. आप school जा रहे हैं. And informal, तुम school जा रहे हो. तुम school जा रहे हो. And very informal, तू school जा रहा है. तू school जा रहा है. And the third person, this and these is something which is closer to you, and that and those are some things or some people which are a bit away or away from you. So in this case, the singular this and the plural these, taking the same example, or let's take another example. Let's say this is my pen. ये मेरा कलम है. ये मेरा कलम है. These are my pens. ये मेरे कलम है. ये मेरे कलम है. And singular, that and those. He is going. वो जा रहा है. वो जा रहा है. And the plural, वो जा रहे हैं. वो जा रहे हैं. Okay, so this was the first case direct. Now let's go to the second one, accusative. First person, singular and plural. I need water. I need water. मुझे पानी चाहिए. मुझे पानी चाहिए. First person singular, now plural. हमें पानी चाहिए. हमें पानी चाहिए. Second person formal. आपको पानी चाहिए. आपको पानी चाहिए. Informal. तुम्हें पानी चाहिए. तुम्हें पानी चाहिए. And very informal. तुझे पानी चाहिए. तुझे पानी चाहिए. Now the third person. इसे पानी चाहिए. इसे पानी चाहिए. इन्हें पानी चाहिए. इन्हें पानी चाहिए. And if somebody is away from you, then singular and plural, that, those. उसे पानी चाहिए. उसे पानी चाहिए. And plural, उन्हें पानी चाहिए. उन्हें पानी चाहिए. Let's take another example of accusative. I am feeling hot, or I am hot. First person singular, मुझे गर्मी लग रही है.
मुझे गर्मी लग रही है. And first person plural, हमें गर्मी लग रही है. हमें गर्मी लग रही है. Then second person formal, आपको गर्मी लग रही है. आपको गर्मी लग रही है. Then second person informal, तुम्हें गर्मी लग रही है. तुम्हें गर्मी लग रही है. And very informal, तुझे गर्मी लग रही है. तुझे गर्मी लग रही है. The third person close to you, इसे गर्मी लग रही है. इसे गर्मी लग रही है. And plural, इन्हें गर्मी लग रही है. इन्हें गर्मी लग रही है. Then singular, that, somebody who is not close to you, उसे गर्मी लग रही है. उसे गर्मी लग रही है. And then the plural form, उन्हें गर्मी लग रही है. उन्हें गर्मी लग रही. Now let's look at the third case, oblique. First person, singular and plural. The example in English would be, talk to me. Okay, talk to me. So the first person singular, मुझसे बात करो. मुझसे बात करो. And the plural, हमसे बात करो. हमसे बात करो. Then the second person formal, आपसे बात करो. आपसे बात करो. And then informal, तुमसे बात करो. तुमसे बात करो. Very informal, तुझसे बात करो. तुझसे बात करो. Third person closer to you, इससे बात करो. इससे बात करो. And then somebody who's away, so sorry, we're plural, इनसे बात करो. इनसे बात करो. Then somebody singular who's away, उससे बात करो. उससे बात करो. And then somebody who's away, plural, उनसे बात करो. उनसे बात करो. The fourth case is a genitive, where some possession is shown. So the first person, let's say in English, this is my pen. Okay, so first person singular, ये मेरा कलम है. ये मेरा कलम है. And first person singular after that, first person plural, ये हमारे कलम है. ये हमारे कलम है. Second person, ये आपका कलम है. ये आपका कलम है. Then ये तुम्हारा कलम है. ये तुम्हारा कलम है. ये तेरा कलम है. ये तेरा कलम है. Now third person, ये इसका कलम है. ये इसका कलम है. ये इनके कलम है. ये इनके कलम है. Then somebody who's away, ये उसका कलम है. ये उसका कलम है. And plural, ये उनका कलम है. ये उनका कलम है. Okay, so these were the four cases and the three persons and their variations for the pronouns. Let's repeat the Urdu words, the romanized Urdu words, for the sake of pronunciation. So I'll go across the line here. So direct, I'll start with direct.
मैं, हम, आप, तुम, तू, ये, वो. Now the second case of accusative. मुझे, हमें, आपको, तुम्हें, तुझे, इससे, इन्हें, उससे, उन्हें. Okay, now we. मुझ, हम, आप, तुम, तुझ, इस, इन, उस, उन. And lastly, genitive. मेरा, हमारा, आपका, तुम्हारा, तेरा, इसका, इनका, उसका, उनका. Okay, that finishes this lesson. I hope you enjoyed it. Khuda Hafiz.